Hello everyone, welcome to Canamrit. I am Soumya Agrawal and today's topic is from the Unit 10 Labour Market. It is part 2. We'll be learning today about unemployment and its various types as well as underemployment. So what is unemployment? Unemployment is a condition which refers to individuals who are employable and are actively seeking a job but are unable to find a job. एक ऐसी condition जिसमें individual who is willing to get a job is not able to get that job. कोई भी इंडिविजुअल जो चाह रहा है उसे नौकरी मिल जाए उसे नौकरी ना मिले इन दैट कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट द फर्स्ट टाइप वील बी लर्निंग अबाउट इज फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा शॉर्ट लिव्ड अनएम्प्लॉयमेंट है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जैसे आपने एक जॉब लीव करने के बाद जो टाइम ड्यूरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन गेटिंग अ नेक्स्ट जॉब दैट टाइम गैप इज कंसिडर्ड एज फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक जॉब छोड़ने के बाद जब आपके पास दूसरी जॉब के बीच में जो टाइम आपको लग जाता है उस जॉब को ढूंढने में और करने में मैनेज उस चीज़ को फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं नेक्स्ट इज cyclic unemployment. The variations in the unemployment workers over a course of economic ups and downs. Economically जब variations आते हैं इकोनॉमी में जैसे रिसेशन हुआ पीपल्स आर अनेबल टू गेट गुड जॉब्स जब इकोनॉमी बूम करेगी तो पीपल विल गेट अ गुड जॉब जब इकोनॉमी डाउन चलेगी तो पीपल विल बी अनेबल टू गेट अ गुड जॉब दैट इज वॉट इज अंडर साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट structural unemployment comes through a technological changes in the structure of the economy. As we all know that capital has two ways. Either हम लेबर से वर्क कराएंगे या फिर मशीनरी से वर्क कराएंगे अगर कोई भी इकोनॉमी में या कोई भी प्लान स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से अगर कोई लेबर वर्क करने के बजाय हम उसे मशीनरी से वर्क लेने लगेंगे इन दैट केस इट्स एन एग्जाम्पल कि अगर हम लेबर की जगह मशीनरी को प्रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं दे विल बी अ सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर people who are willing to work. So any kind of structural or technological changes that leads to unemployment are considered under structural unemployment. Another is institutional unemployment. Institutional unemployment is a long-term persistent unemployment that is caused because of rules and regulations that discourages hiring and encourages unemployment. किसी भी rules and regulations के चक्कर में government laws के चक्कर में जिसमें hiring में problem हो या फिर ऐसे rules and regulations है जिससे long term unemployment exists करे that is because of institutional unemployment. Next is natural unemployment. Natural unemployment is a combination of frictional unemployment and structural unemployment. We all know people are always looking for a job. ठीक है so there exists frictional unemployment. अगर ऑलरेडी एक जॉब हम कर भी रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वी आर सीकिंग फॉर अ न्यू जॉब एंड द नेक्स्ट थिंग जॉब अपॉर्चुनिटी रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग कॉजिंग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कोई ना कोई अपग्रेडेशन या फिर कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस परमानेंट होते रहते हैं जॉब्स में तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करता है एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट दैट नेचुरली एग्जिस्ट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट दैट नेचुरली एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस इट इज़ कॉमन फॉर पीपल टू वॉलंटरी leave jobs for position to move into another part of the world that comes under natural unemployment. Next is longer term unemployment. Any sort of unemployment that exists more than 27 weeks that is considered under long term unemployment. Like cyclic structural unemployment drives long term unemployment. Cyclic अगर इकोनॉमी एक बार डाउन हो गई तो उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे सिमिलरली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कोई एडवांसमेंट आया है तो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका सो दैट इज़ इट नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल मीन्स समटाइम्स कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है या सर्विस ऐसी है जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती है तो ठीक है तो पीपल विल बी गेट एम्प्लॉयड तभी एम्प्लॉयड होंगे जब वो सीजन चल रहा होगा एंड फॉर अनदर टाइम दे विल नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर दैट तो जैसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में एक पर्टिकुलर क्रॉप एक ही सीजन में ग्रो करता है तो देयर विल बी टाइप ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट और जब वो क्रॉप नहीं ग्रो करेगा तो दे विल बी सीजनली अनएम्प्लॉयड तो दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट द नेक्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन real wages or the cost of employing a worker is too high. We all know that if an employer is not getting the benefits out of the employee and he is paying him high, that sort of employee will not be considered for much time. So companies cannot afford real wages, decided to hire many people for seeking such jobs. जो भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय से उतना बेनिफिट नहीं रिसीव करता है इन रिटर्न व्हाट ही इज गिविंग हिम तो दैट टाइम ही विल नॉट रिक्रूट हिम अगैन इन दैट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज cyclical unemployment.
Next is underemployment. One more type of employment we have left by mistake. One is disguised unemployment. We can consider this now. Disguised unemployment is that the work which is being done can be completed by 100 people. We have employed 110 people for it. Means कोई ऐसा unemployment we can consider we have जिसमें कम लोगों की ज़रूरत थी बट वी स्टिल वी हैव एम्प्लॉयड मोर पीपल फॉर दैट जॉब. तो वो जो 10 का बीच में जो बैलेंस बचा दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हम किसी काम में जितने रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉस भी होगा एंड दैट टाइप ऑफ देयर वर्क विल बी नेग्लिजिबल. अगर 100 पीपल से फील्ड में वर्क कर सकते हैं और उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है एंड वी आर एम्प्लॉय 110 पीपल तो 10 वर्कर्स जो होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. दैट वोंट बी नीडेड. And the next is underemployment. Underemployment differs from unemployment in that it describes people who are working but aren't employed at their fullest capacity. Measuring underemployment shows how effectively the economy is using labor force skills, experience, and work availability. Underemployment ka means hai a person is working. It is not that a person is not working, but he is not able to work to his fullest capacity. अगर कोई engineer है and then too he has done MBA also, he has management skills also, but वो एक basic job कर रहा है तो somewhere उसकी capacities के according उसकी job नहीं है. He is not getting that pay. Underemployed basically is divided into two figures. Number one is visible underemployment and invisible underemployment. Visible underemployment. Employees work part-time despite the desire to work more hours. Underemployment people such as office employees who can find only part-time roles may work multiple jobs to earn the equivalent salary to a full-time salary. It means उनको पार्ट टाइम वर्क मिलता है जो फुल सैलरी एक फुल टाइम जॉब डिज़ायर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू undergo multiple jobs in order to get a full salary as per their qualification. Next is invisible underemployment. Invisible underemployment means a person who cannot find a job in their chosen fields and can take a job that isn't in line with their experience and skills. They represent invisible underemployment. किसी को जॉब नहीं मिल रही है to which the field he belongs to. MBA है and he is doing a clerical job, a normal job, then it will be considered as invisible unemployment because जो उसकी क्वालिफिकेशन है ही इज़ बीन अंडरपेड एज वेल एज वो जो जॉब का रोल है जो उसको एक्चुअल में करना चाहिए ही इज़ नॉट डूइंग दैट टाइप ऑफ जॉब. मैनेजमेंट एक कंसल्टेंट जॉब होने की बजाय ही इज़ डूइंग एन क्लरिकल अकाउंट्स जॉब. दैट विल बी कंसिडर्ड कि जस्ट फॉर बिकमिंग एम्प्लॉयड एक एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने एक जॉब कर ली. दैट इज़ विल बी इनविजिबल. So this was it for today. In the next video, we'll be discussing about the dynamics of labor market and various other topics related in Code 55, Unit 10. Thank you. Hope you enjoy learning.